हेलो, क्या हाल है आप सब लोग का? आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर फॉर द एपिसोड 3 ऑफ द म्यूजिक सर्कल पॉडकास्ट. एंड इस पॉडकास्ट में मैं बैठा हूँ मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त सौरभ सुमन के साथ, हु इज़ एन अमेजिंग बेस गिटारिस्ट. और ये कॉन्वर्जेशन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज बोथ सौरभ एंड मी have a very similar kind of an approach on living life as a musician and doing other things simultaneously. Saurabh is amazing at managing his time, and apart from being a full-time session and live musician, he also is running a business and pursuing his MBA all at the same time. Check out his YouTube channel, The School of Bass, and his website, theschoolofbass.in. अगर आपको गिटार सीखना है and you're looking for guitar courses that will help you get to the next level and achieve your guitar goals, then check out my website gauravsharmamusic.com, where you will find guitar courses for all levels from beginner to intermediate. And my latest guitar course is called Super 30, where you'll get guitar lessons for 30 classic Bollywood songs. And now here's the episode 3 of the Music Circle podcast with Saurabh Suman. पिज्जा और म्यूजिक में एक कॉमन चीज़ होती है. मैं बात कर रहा हूँ बेस. लोग मेरे को बहुत पूछते हैं कि why did you start? Why I started it is literally because I was just bored. सब musicians के पास में time है to do more than just music, and everybody should do it. If you had a chance to meet anyone living or dead, your favorite musician, who would it be and why? There are so many things you can control, many things you can't control. What do you think about money and art together? They do not have to be like, ये मैं मजबूरी के लिए करता हूँ, ये मैं artistry के लिए करता हूँ. अगर देखो आप मुंह से बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, तो ये चीजें छोटी लगेंगी. अच्छा, how long did it take you to come here? Well, I put aside about 1 hour 30 minutes, but it took me about 45 minutes. Not bad. क्योंकि मैंने ना मेट्रो ले ली. Nice. So that was the. इसको उल्टा कर सकते हैं ऐसे? अंदर ना? हाँ. मैं भी वही सोच रहा था. क्योंकि अगर The only problem I have with these is that it looks so big. It's a little distracting. It's okay. That's why I like it. अगर देखो आप मुंह से बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, तो ये चीजें छोटी लगेंगी. So that is something you should think about. Yes, that's for sure. तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों कि आज क्या हो रहा है. Also I'll tell you कि what is this podcast called. I have an explanation for that. Okay. So दोस्तों मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा और म्यूज़िक में एक कॉमन चीज़ होती है जिसकी बिना ना पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना म्यूज़िक अच्छा लगता है. मैं बात कर रहा हूँ बेस की. तो आज हमारे साथ जो हैं, ही इज़ द बेस गिटारिस्ट, जिनको आपने अपने गानों में जो सुनते हो उसमें भी सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा. और इनको मैं दोस्त कह पा रहा हूँ तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो आज इनसे हम कुछ बातें करेंगे और देखते हैं क्या होता है. सही बोला कि नहीं बोला? देखते हैं क्या होता है. वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज. वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या बातें करनी है. सो मेरा बिलीफ ये है, एंड ऑफ कोर्स यू माइट अग्री, द थिंग इज as soon as you start hanging out with people who are better than you, who are better musicians than you, better people than you, Yeah. you're going to get better. बिल्कुल सच. Right? So I think my struggle, or like my pursuit in the past year has been कि मैं अपने सर्कल को कैसे बढ़ाऊँ. And it has been कि मेरे सर्कल को और बेहतर लोगों से कैसे, you know, how do I get in touch with them? Right. How do I be around them? And then that's when I think I can learn. Correct. And then, but to do that, I have to become a high value individual ताकि वो higher circle को मेरे में value दिखे. हाँ ये है. Right? But what do you think generally about this circle thing? Like, do you believe like you are the sum of 5 people who are around you? हाँ बिल्कुल सच बात है ये. है ना? और कई बार ये भी होता है कि मेरे एक्सपीरियंस में that you have to be away from 5 people also. Okay. हाँ कई बार to discover yourself. Right, right. कई बार ना मतलब तुम ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हो जो कोई तुम्हें बाहर से हेल्प नहीं कर पाएगा जिन चीज़ों के सामने. Correct. जिनके आंसर तुम्हें ढूंढने होंगे. तो आप बोल रहे थे ना अभी कि थोड़ा हाई लेवल इंडिविजुअल बनना है ताकि वो 5 लोग आए बात कर लें आपसे. राइट. तो वो जो इट्स नॉट बिकमिंग हाई वैल्यू इंडिविजुअल, मगर एक मिनिमम लेवल टच करना पड़ता है. राइट राइट. एज एन इंडिविजुअल. राइट. कि अगर आप किसी से बात करो तो एक रिस्पॉन्स रिसीव कर सको. सो if I think about music, best thing to do is
कि अगर आप बॉम्बे आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एज अ बेस प्लेयर जीनो बैंक्स से मिलो, या फिर यू वांट टू प्ले विद अदर ग्रेट ड्रमर्स हियर, जयरो कवि और रंजीत बारोट, तो दे आर ऑल ग्रेट पीपल, और वो आपके साथ बजाएंगे भी, मगर एक मिनिमम लेवल उनको चाहिए कि वो आपके साथ में कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें, थोड़ा बेसिक लेवल पे आप हो, उसके बाद में दे विल सपोर्ट यू टू बिकम अ बेटर म्यूजिशियन, डेफिनेटली. So you have, okay, so this is like a very good question that I'm getting, because मेरा भाई का जो ऑफिस है ना बैंगलोर में, we sometimes hire people who are content producers, and I just told you, right, like कैमरा को जो हैंडल करते हैं वगैरह वगैरह. So we have often seen कि if you get someone with high skill but very bad attitude versus low skill but extremely nice attitude and learning attitude, we would always prefer this. Correct. Right? So is that what you're saying कि अगर ये लोग जो हैं Gino Banks and like these big musicians that you spoke about, are they willing to like groom like a beginner musician if they see that he has the capability? हाँ, ग्रूमिंग इज डेफिनेटली वेलकम, मगर ये है कि ऑफ कोर्स एक बेसिक वर्क होता है ना जो कहीं पे भी हो सकता है. राइट. ठीक है, उसके लिए आपको नेसेसरीली अपना सर्कल चेंज करने की जरूरत नहीं है. Got it. जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बेस स्क्रैच से शुरू किया मेरे साथ, वो 3 साल मेरे से ऑनलाइन सीखा. Okay. राइट, बट ही इज लिविंग इन कानपुर. तो लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो किस तरह का म्यूजिक वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बजा पाएगा. Sure. और थोड़े टाइम में वो आउटग्रो कर गया सबको. फिर नेक्स्ट पाथ क्या होगा? नेक्स्ट पाथ ये रहा कि अपना सर्कल चेंज करो अब. Yeah. तो वो मिनिमम लेवल अचीव करके उसने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया दिल्ली में. वहाँ पे उसने बजाना शुरू किया लोगों के साथ में, उसका सर्कल क्रिएट हुआ, सर्कल चेंज हुआ. अब वो और बेटर गिग्स बजा रहा है दिल्ली में. ऐसे ही करके वो धीरे धीरे स्टार्टेड फ्रॉम कानपुर. सचिन गोयल नाम है उसका. Okay. प्लेज ब्यूटीफुली. मतलब रिसेंटली मैं गिग देखने गया था उसकी, मुझे देख के ये भी यकीन नहीं होता कि मुझसे सीखा हुआ है कई बार. बहुत ही अमेजिंग, लाइक रियली दैट इज द पार्ट जो आपके कंट्रोल में, आपने एक बार वो कंप्लीट कर लिया. और शोकेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि व्हेन आई रेकमेंड लेट्स से यू टू समबडी कि यू नो गौरव माय फ्रेंड प्लेज ब्यूटीफुल गिटार, वो मेरी बात सुन लेगा. मे बी वो घर जाके एक बार देखना चाहेगा कि तो आप करते क्या. एग्जैक्टली, व्हाट इज योर साउंड, व्हाट इज योर वाइब, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू यू नो, अगर आप उनको कॉल करते हो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. Now these people or anybody in the music industry get 1000 messages a day. I mean just exaggerating the number, but बहुत मैसेज आते हैं कि आपसे मिलना है, बजाना है, सीखना है. For sure. मगर जिसको आप मैसेज कर रहे हो ना, वो भी ये देखता है कि how keen are you, where are you in life, do you actually need that person right now, or do you need something else or somebody else. So interesting. That is something that I have seen कि there is so much you can do by yourself. And by yourself का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकेले बैठ के. resources available है, courses available है, especially in today's day. Correct. तो पहले तो जाना ही पड़ता था. Correct. शहर बदलना पड़ता था. Correct. अब नेसेसरी नहीं है. अब जहाँ पे हो वहाँ पे करो. Then become the best you can in that city. Go to the next city, go to the next city. और अगर और पुश करना है तो विदेश चले जाओ. Correct. तब फिर सब बदल जाता है उसके बाद में. Agreed. So where are you from basically? तो मेरी रूट्स पंजाब से है. Okay. बड़ा मैं दिल्ली में हुआ और करीब 7 साल पहले मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था. And this is purely for music? Yeah, I wanted to play bigger gigs. Okay. I would say. दिल्ली में ना एक पॉइंट आ जाता है कि आप सबके साथ बजाने लग जाते हो. एटलीस्ट 7 साल पहले जितने भी बैंड्स थे, आई वाज प्लेइंग प्रीटी मच विद एवरीबॉडी. 1-2 बैंड्स, 3-4 बैंड्स, मतलब ऐसा टाइम हो गया था कि सभी के साथ में एक बेस प्लेयर बजा रहा था, क्योंकि शहर में 3 बेस प्लेयर थे या 4. ऐसा टाइम था. सो then I wanted to just see what after this, and I wanted to of course make more money also, क्योंकि दिल्ली का पे स्केल और बॉम्बे का पे स्केल अलग है. तो इसलिए मैं यहाँ पे आया to explore the scene, and that was pretty much the reason. Yeah. Music. And it's been 7 years now. It's been 7 years. Crazy. 7-8 years, something like that. Crazy.
यार even the when I was doing college in Chennai, हाँ. I was going to KM College of Music. Okay. वो रहमान सर का जो एक इंस्टीट्यूट है उधर, तो वहाँ जाते टाइम भी जो भी gigs होते थे, I used to face the same issue. Like if you wanted to go out and play a band, like you had only probably max to max 2 to 3 people who you could call for a bass guitarist. You know? That's it. That is like definitely I think India में you need to educate people more about this instrument. Correct. Because definitely if someone hears it, they are going to be interested in it. हाँ. I think it's more it's more an issue of they haven't discovered it yet. हाँ, और मैं भी सरप्राइज्ड हूँ द स्कूल ऑफ बेस जो यूट्यूब चैनल है. हाँ. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1000 सब्सक्राइबर टच होंगे और वहाँ पे कैप कर जाएगा. Okay. उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे. गिटार तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. Yeah. But this one reached 22,000 subscribers right now. But the biggest surprise is जो schoolofbass.in website है, वहाँ पे 700 students हैं bass के. Beautiful. Which is very unexpected. कि Right. ये कैसे हुआ? Right. मगर I have seen comments where जब मैं bass सिखा रहा हूँ तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि मैं bass player भी नहीं हूँ. मगर बिकॉज यू आर टीचिंग समथिंग कि ये काम कैसे करता है, मुझे पहली बार सुनाई दिया है. तो एजुकेशन से हेल्प तो हो रही है. या यू नो देयर इज वन मोर थिंग दैट आई डिस्कवर्ड. मैं जब मेरा एक ना फेज आता है, आई हैव लाइक अ 15-day फेज एंड मैं वो 15 दिन वीडियो डाल देता हूँ हर दिन. रियली? हाँ, लाइक आई शूट. अच्छा, मेरे को अब कंसिस्टेंट होना है, मेरे को शूट करना है. आई हैव टू बी रियली लाइक एक्टिव एंड बी इन फ्रंट ऑफ पीपल्स फेसेस. So, you know, the algorithm also likes me, and at the same time, like, I am also establishing my whatever, like, the biggest portfolio of work. You keep putting it out, right? So, अभी वो भी like it lasts like 20 days, ठीक है? वो 20 दिन last करता है और वो 20 दिन मैं बना के shoot करके डाल देता हूँ. Now, I might not see the results immediately, but I have seen so many people comment that I watch your videos just because how, like, it just सूदिंग अच्छा लग रहा है सुनने में. That's it. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको नहीं सीखना है गिटार. They don't have anything to do with guitar, learning guitar or anything else. It's just that they just want to see it and they feel good. And I'm like, and so many comments, right? मेरे को समझ में तो कुछ भी नहीं आया, सर के ऊपर से गया, but I enjoyed it. And that's when I figured out कि यार you're not catering only to these people, you know. And then I kind of looked at myself कि I also look at a lot of like food reels. I don't cook and it's universal. I get it. Food is universal, right? But then it feels nice to watch. मैं क्या देख रहा हूँ आजकल? हाँ. मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइवेट जेट की वीडियोस देख रहा हूँ मैं. Bro, same. हाँ. Same. मैं खरीदने तो नहीं वाला अभी. Exactly. पर मैं देख रहा हूँ किसमें कौन सा इंजन होता है. Right. कौन सा प्राइवेट, पता नहीं क्यों देख रहा हूँ मैं. Oh wow. Crazy. मतलब बैंक में पैसे भी नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए नहीं, बट प्राइवेट जेट की वीडियो देख रहा हूँ मैं कि अच्छा प्राइवेट जेट कितने का आता है. और ये छोड़ो, वो कह रहे हैं $40 million. तो पता तो है नहीं कितने होते हैं. कैलकुलेटर में देख रहा हूँ $40 million इन रुपीस ऐसे करके कितने होते हैं. उसमें कुछ तो आता है, अजीब अजीब से नंबर आते हैं ना. ओ भाई 250 करोड़. अच्छा 250 करोड़ में कैसे कमाते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे कमाते हैं. That is an insane question to ask. So मैं सोच रहा हूँ अच्छा. Have you seen this guy? That guy who comes in like a suit and a pant, and वो basically दूसरे लोग जो प्राइवेट जेट के बारे में कंटेंट डालते हैं ना, उनको रोस्ट करता है वो कि no he is like हाँ वही doesn't know what he's talking about. मैं उसी का लिटरली 3 दिन पहले डिस्कवर किया हूँ. I love that guy. I love that guy. मुझे मजा आ गया उसकी वीडियो. Crazy ना? It's too like informative and it's too interesting to watch. हाँ. So I'm exploring this space actually because today only I was thinking that when I put out vlogs for musicians only versus when I tell people about my life, general people, regular people, उनको अच्छी लगती है लाइफ कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप एक शहर गए, फिर दूसरे चले गए, तीसरे चले गए और आप सोए नहीं हो, आपने स्टेज पे इतने शोज किए, तो उनको काफी इंटरेस्ट आता है इस लाइफ में. सो टुडे ओनली आई वाज थिंकिंग कि मुझे आई वांट टू डॉक्यूमेंट लाइफ फॉर vlog, lack of a better word, for everybody. Everybody, okay. Like what is a musician's life like? Right. Exactly. Right.
और मुझे नहीं पता था कि म्यूजिशियन कैसे फंक्शन करते हैं. अगर मुझे भी दिख जाता ये पहले तो काफी चीजें मैं भी सीख लेता. राइट जस्ट फ्रॉम लुकिंग. एंड ये भी होता है कि कई बार किसी को आप देखते हो ना कुछ करते हुए तो आपके सपने बिल्ड होते हैं. परफेक्ट. या So, same with even podcasting actually. I started podcasting because I was in a very big emotional hell in my life some time back. और मुझे एक दो podcasts ने help की थी. Nice. To get out of my own head. Right. And you know, simple guidance. Do you want to name them? Which one were they? एक तो मैट डेवेला का एक पॉडकास्ट होता था. Oh, nice. वो याद है आपको? या बहुत तो सही. मुझे पता नहीं था उससे पहले कि पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है. राइट. तो it was a strange phase of life where I had zero money, but I would just listen to podcasts and cycle because that was the only entertainment I was doing most of the Got time. it. So that guided me to design life, you know, to think about life in a better way कि life को design करो. फिर वहाँ से एक दिन ऐसे करते करते जो रोगन पॉडकास्ट मिल गया. तो शुरू में तो वो बंदा पसंद नहीं आता है. कहता कि आप बदतमीज आदमी है, कैसे बात कर रहा है. Right. And then you start listening to him and then you start seeing other sides of him. Right. और फिर of course जो लोग आते हैं वहाँ पे तो amazing होते हैं. Yeah. So उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला. And then वो लोग जिन books की बातें करते हैं. So I used to pick up all those books and read them. So these two podcasts were life changing for me. मगर आज की डेट में क्योंकि तब इंडियंस पॉडकास्ट नहीं करते थे. या आज की डेट में जो निखिल कामत कर रहा है, insane, right? मैडनेस. Madness. पर्टिकुलरली हिम बिकॉज और भी पॉडकास्ट हैं लेकिन जो इंटरव्यूअर है ना वो असली नहीं है. मतलब कि वो कैमरे के लिए तैयार होते हैं. आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप सबसे इंटेलिजेंट बन सकते हैं. That's not how you talk, right? Yeah, 100%. But Nikhil Kamath talks like the way he talks. Yeah, the way he talks. Right? Yeah. And For there are some reason, similar- his like it doesn't feel कि उसको फिल्म किया जा रहा है. He's very natural. हाँ मगर वो स्कोप भी नहीं है ना, वो करना भी नहीं है उसको. Exactly. तो ऑथेंटिसिटी बड़ी वैल्यू Yeah. बनती है वहाँ पे. फिर I like Raj Shamani's way also. Right. But then I also consider that these people are also very young. मतलब they have achieved so much. So much, yeah. That is magical. Yeah. मगर कुछ questions में थोड़ी सी वो हो जाती है, immaturity हो जाती है. Right. I mean, hats off. I read their books also, man. Raj Shamani की Bill Don't Talk है. That's a great book. अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, थोड़े उसमें methods लिखे हुए हैं. मगर when you hear these real Indian podcast, real ones, there are some others which I can't deal with. I can't bear them. Even if the interviewer is good. Right. I don't want to name. Right. मगर निखिल कामत का तो मतलब लाइफ चेंजिंग. वो तो यार I always make it a point कि जब भी उनका podcast आता है, me and my brother, we sit down, just put everything aside and watch that podcast. And that's the beauty of like a very well done content or like a good product, right? Yeah. 3 घंटे का भी लगता नहीं है कि वो 3 घंटे का है. बिल्कुल. You get so much value out of it. And it's literally like each podcast is like a master class. Yeah. है ना? And a serious one. Yeah, very exactly. deep one. That's something I really appreciate about Exactly. this guy. What was your favorite podcast of his? यार मैंने पूरा जो सुना है वो एक ही सुना है अभी, वो इन्फ्लुएंसर्स वाला. Oh, that was my favorite as well. तो मैंने बाकी थोड़े थोड़े सुने हैं. Okay. But this one was like I have to hear it the whole thing. Right. क्या हो रहा है आजकल. Right. Yeah, that was crazy. But yeah, going back to like what you told कि so now you're planning to do more vlogs, is it? देखो आज मैंने लिखा है ये करने के लिए कि मैं चाहता हूँ ये करना. Okay. तो आज मैं ये जो बीच वाला कैमरा है यहाँ था नहीं. हाँ. ये इसीलिए आया था मेरे साथ कि मैं Did व्लॉग you? करूँगा. Oh, nice. मगर when I left the house and I've been doing the vlogs for some time. वो स्कूल ऑफ बेस के टाइम पे किए थे. Correct. और ऑफ कोर्स मेरे कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे पहले. यार, no, sorry to cut you off. हाँ. But I remember as you told about this vlogging thing, I remember you are a person who I see lot on my Instagram stories who's very naturally doing already vlogging on the stories. Right? मैंने किसी के और स्टोरी में मैंने वो नहीं देखा है कि they have been like कि अरे आज हम लोग यहाँ आ गए
And if for some reason it doesn't feel like you're again doing the vlog because you want to do like a vlog. You're just like naturally capturing कि आप क्या कर रहे हो. I really want to share. When I really want to share, then I share. Yeah. और otherwise क्या हो रहा है कि एक चीज अजीब हुई आज दो, which was a very big shock to me. Okay. When you vlog in public, हाँ. it is weird. Yeah, it is. Right? It It's is, weird. You're just by Correct. yourself. बोल रहे हो कुछ आप. Correct, correct. And especially जब आपने DSLR पकड़ा हुआ है तो और अजीब हो जाता है. Right, right. तो I had overgrown that issue, right? Because I taught myself to not feel that way. And of course, थोड़ा सा you have to be aware and careful कि तुम लोगों को तंग ना करो, तुम्हारे आसपास जो है. मगर मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा एक shyness vlogging को लेके बहुत ज़्यादा थी पहले. मतलब पहले vlogs जो थे मेरे बहुत ही मुश्किल होती थी मुझे करने में. Now that was going to be my second question because when I saw you vlogging on the stories, it didn't feel like you had any kind of fear. You know? Because So how did you get over it, or did you like consciously do something to break that? कि I want to feel natural. यार fear break करने का तो एक ही पता है मेरे को सिस्टम. बार-बार करते रहो. बार-बार करो, yeah, of course. और ऑब्जेक्टिव रहो. हाँ. मतलब पहले मैं जब बोलता था ना, जो मेरे शब्द हैं ये साफ नहीं सुनते थे. जैसे कुछ बोलना है ना, मुझे पहले ऐसा सुनता था. अच्छा मैं कल आ रहा था वहां से वो घूम के आ गया. Right, ऐसे सुनाई देता था. Right. फिर स्कूल ऑफ बेस शुरू करना था, गिटार सिखाना था. हाँ, हाँ. मतलब इतना भी खराब नहीं था, मगर कई सारे वर्ड्स थे जो फंबल्ड आते थे. आते थे. Right. तो मैंने एक बार बोल के कोशिश की कि मैं देखूं तो सही कैसा लग रहा है. Right. So when I spoke, I only couldn't understand कि मैं बोल कैसे रहा हूँ यार, मैं कैसी आवाज निकाल रहा हूँ. Interesting. तो शुरू के जो वीडियोस थे स्कूल ऑफ बेस के, वो ऐसे रिकॉर्ड हुए कि पहले मैं बस बैठता था सेल्फी कैमरा ऑन करके, एंड आई यूज्ड टू जस्ट स्पीक कि अच्छा ह को थोड़ा साफ बोलना पड़ेगा, त को जरा क्लियरली बोलना पड़ेगा, ये क्लियरली बोलना है तो क इस पे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा. Correct. वर्ड्स को, क्योंकि मैं प्ले कर रहा हूँ ना अपने आप को जब वापस, तो मुझे सुनाई दे रहा है. और आज हम सीखेंगे, पहले क्या आएगा अगर मैंने ये सुना नहीं होता, और आज हम सीखेंगे. Oh, got it. Right? It's like right. You have to say और आज हम सीखेंगे. Right. ये मेरे को नेचुरल नहीं था. Right. तो मैं जब रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनता था, अच्छा देखता था कि ये सारे शब्द ठीक कर रहे हैं. Right. फिर उस चीज को लाइफ में डालना भी शुरू किया कि किसी से बात करूं तो साफ बात करनी शुरू करूं. So enunciation becomes clearer by repetition. और ऑफ कोर्स कैमरे के आगे बैठ के अपने आप को देखना अजीब लगता था कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ, क्योंकि कई बार अपनी परसेप्शन भी नहीं होती. Right. अब देन अगेन दो उसके रास्ते निकलते हैं, या तो तुम अपने आप को देख के सब बंद कर दो, हाँ. गलत हेड स्पेस में चले जाओ, या फिर इफ यू लुक एट योरसेल्फ लाइक ओके आई डोंट लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ एंड आई वांट टू चेंज इट एंड दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू बी, यू नो. एंड यू देन फिगर आउट हाउ इज इट डन. Right. There are so many things you can control, many things you can't control. जैसे मैं अपने बाल नहीं उगा सकता, Right. पर मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है. Right. But there are things you can't control which God has given you. Yeah. But make the most of your powers, your strengths, whatever is in your control. Fix it and be happy about fixing it and keep moving on. Vlogging was the same issue. पहली बार पब्लिक में कैमरा लेके गया मैं, तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा निकाल के ऑन किया, नीचे कर दिया. और तब कैमरे भी बड़े होते थे, इससे बड़े होते थे. Right. और भारी था वो, उसके नीचे जो भी का पूरा ट्राइपॉड था. तो उसको निकाला, बोलने की कोशिश की, नीचे रख दिया शर्म के मारे. फिर कोशिश की, फिर नीचे रख दिया. फिर जैसे तैसे करके कैमरा हिल रहा है, उसको जोड़ जाड़ के मैंने कहा यार ठीक है, इट विल बी अ मेस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम लेसर ऑफ अ मेस. How long back is this? So maybe I did it like 2 years ago, 2-3 years ago. Okay. So then the other part comes where you put a camera somewhere, you walk in front of it, right? तो वो भी मुझे करना था कि उसको फ्रेम कैसे करते हैं, how do I make the best of it? Right. The Casey Neistat style. Correct. Yeah. वो तो भगवान है. वो तो like because of him like you like to do these type of shots, right? कि कैमरा रखो और सामने से walk करो, इसको बंद करो, it's crazy. It's unbelievable. And imagine the amount of work that takes. It takes a lot of work. It's insane
how much work that takes. तो बाद में vlogs करने में इतना मजा आने लग गया मेरे को, and I became very fast with it. So then eventually the question became कि मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं सो के उठ गया, Okay. हाँ. अब मेरे को देखो मैं कहाँ पे हूँ. If somebody is watching it, उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से. There has to be a start 100%. and end. Then I wanted to make vlogs about something. जैसे अगर मैं गिग बजा रहा हूँ ska बैंड के साथ में, तो मैंने एक vlog बनाया कि ska music क्या होता है. So then I edited the way I wanted to, थोड़ा सा गिग डाला उसमें. Okay. Then जो हमारा बैंड लीडर है उस बैंड का, द फैंकुल, उसका रमोन इब्राहिम, उसने बताया ska music क्या होता है, इंटरव्यू किया उसका छोटा सा, 6-7 मिनट में सब कुछ रैप अप कर दिया. So vlogs became about something. Right. One vlog became about, you know, living life as a musician, how it's dangerous but it's also fun, you know. So I wanted to make it about something rather than just make it about I don't know, Like showing too off generic. or just whatever, you're not showing off but just showing whatever the hell is going on. Right. तो कुछ चाहिए उसमें से juice. Right. हाँ, but this actually, like, you know, makes it like multi-purpose also, because the vlog is actually having a purpose. Correct. Right. So that then of course provides value to the viewer also. अब ये चीज़ ना मेरे को भी बहुत लोग आके जब शुरू में congratulate करते थे कि hey congrats, you like hit like 50K whatever on your Instagram or YouTube. At one point I actually believed that, you know, I did it. हाँ. I posted every day. If you post every day, तुमको भी मिलेगा. But then later I found out कि that's not the case. Like I know a lot of people who are posting every day, but उनका कुछ हो नहीं रहा है. हाँ. That's when like I kind of figured कि oh, so it's not just like being consistent. That is just a default. कि अगर आपके पास valuable information है, which people can use, and you're good at it, plus you make good videos about it, you have that skill also, and plus default कि you're consistently giving that value to the viewer, that's when all these things add up and then you start to see the results. Correct. So that took me a long time to like understand, you know. तो किसी ने ना एक बड़ा सी ब्रेकडाउन किया हुआ है इसका, हाँ. कि इसको हम मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर डालते हैं. तो मार्केटिंग का काम होता है एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी. मतलब कि आप शोकेस करते हो कि आप अमेजिंग हो, Yeah. so they trust you. Yeah. Second is the job of marketing is to give value. Give value. कि मतलब आपकी जब कोई वीडियो देखेगा उसको वहाँ से कुछ मिलेगा. और मार्केटिंग का काम है ट्रस्ट बिल्डिंग, that people if they see you consistently they build trust. Right. और है जनरेशन ऑफ लीड्स, बिकॉज अगर आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो कहीं पे भी, आप किसी पर्पस से कर रहे होगे, यानी कि आपको कुछ सेल करना है एंड ऑफ द डे, तो जिन लोगों को आपके मटेरियल की और भी ज्यादा जरूरत है वो वहां से आप जनरेट करते हो. ये कंप्लीट मार्केटिंग एक्टिविटी बनती है. बट किंग ये रहता है इसमें, यू हैव टू गिव वैल्यू. Correct. कैसा दिखता है वो भी अगर आप ड्रॉप कर दो ना, हाँ. you have to give value. You have to just give value. Yeah, that is definitely one thing I've seen in definitely our audience in India. कि अगर वीडियो में उनको वैल्यू मिल रहा है, they just don't care how the video looks. Yeah, my first videos are very bad. And I keep them क्योंकि I feel proud about it. Right. Definitely you have that learning curve. Yeah. Learning curve से ज़्यादा मेरी limitations बहुत थी. मेरे पास ना gear नहीं था. Okay. हाँ. तो हमेशा ऐसा लगता है कि कैमरा होना ही चाहिए या होना चाहिए. तो मेरे पास जो फोन भी था ना, वो भी 2 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता था. उसमें कुछ प्रॉब्लम थी. सो देन आई रियलाइज, यू नो, मेक एनीथिंग हैपन, लाइक मेक समथिंग हैपन विद व्हाटएवर यू हैव. तो मैंने वीडियो बना दी 2 मिनट बेस लेसन्स विद सौरभ सुमन. 2 मिनट तो रिकॉर्ड करेगा. करेक्ट. जैसा भी किया, जैसे भी मैंने बोलने की कोशिश की. फिर 2 साल तक तो स्कूल ऑफ बेस फोन पे ही चला है. पूरा फोन पे रिकॉर्ड हुआ है. उसके बाद में DSLR आया, यू नो, सेव्ड सम मनी एंड देन आई बॉट इट. मगर ये था कि 2 साल वो इसीलिए चल पाया क्योंकि ऑडियंस को कुछ सीखने को मिल रहा था. या 100%. सो दैट इज समथिंग आई फील इज किंग, गिविंग वैल्यू
डूइंग एनी ऑफ योर वीडियो एनीथिंग ऑन द इंटरनेट विद द पर्पस ऑफ गिविंग समथिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली एंड आई थिंक मैं भी जब शुरू करा था इट वाज द सेम कहानी, सेम एग्जैक्ट सेम कहानी। मैं फ़ोन से शूट करता था एंड टू बी ऑनेस्ट लोग मेरे को बहुत पूछते हैं कि व्हाई डिड यू स्टार्ट इट, राइट, व्हिच आई वांट टू आस्क यू अगेन आल्सो, बट देन व्हाई आई स्टार्टेड इट इज लिटरली बिकॉज आई वाज जस्ट बोर्ड। हाँ, So I was at a point where I finished college and now I have no idea कि मेरे को क्या करना है, right? The other problem is that I always knew कि I wanted to do music, but what inside music exactly, which it's a big question, right? तो मैं बोला कि ठीक है, let's think about it, let's try to explore. Yeah. One day I put up the phone and for some reason I had seen some other lesson on YouTube or Instagram or something. I was like, ठीक है, let me try it to do the same thing. So I put one video exactly on I think December 1st of 2021, and then the second video I put it out on the next day, and the third video on 3rd December. Now the third video took off a little bit, and वो 30K views का एक push आ गया. So when that came, that was enough for me to be like कि you know what, I've been learning and playing guitar for the past 7 years. And the video that I shot, edit, and then put out took me a combined of max 20 minutes. Right. Because when you're doing something for so long, you have all the information inside you. Right. You have the phone, record, edit, and put it out. It didn't feel like it was a big effort from my side. Correct. So I was like, यार ये तो बहुत अच्छा है. Like मैंने ये video डाला, लोगों को value भी मिला. And then something's working out for me. So you know what, I'm going to make this consistent. And then for the next 2-3 months, I think that was the most longest period of me being consistent. Where for 3 months I put out a video every single day. And that has given me everything that I have right now. मेरे को consistent per day content release करने में as a bass player, particularly जो मैं genre touch कर रहा हूँ ना, Bollywood bass playing, वो करने में बहुत मुश्किल होती है. उसमें स्किल का इशू नहीं है, उसमें इनोवेशन बहुत लगती है. तो मेरी एक एक वीडियो में काफी ताकत लगती है, क्योंकि जो बेस बॉलीवुड गानों पे बजा हुआ है, जितने गानों पे अच्छा बेस बजा हुआ है वो गिनती के हैं. राइट. और वो मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी. कर चुके हो, हाँ. मुझे उनको सीख के बजा के सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. राइट. मगर जब मैं हर बार बैठ के सोचता कि यार क्या सिखाऊं और कैसे सिखाऊं, क्योंकि इनोवेट करना पड़ेगा. मेरे पास में अगर मुझे स्लैब बेस डेमोन्स्ट्रेट करना है, मैं किस पे कर सकता हूँ? मैं ओसाका मुराया पे कर चुका, कहना ही क्या पे हो गया. देन वी हैव 1 or 2 more songs, दिल को तुमसे प्यार हुआ, वो कर दिए वो सब. अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मेरे पास ऐसा होता, मान लो मैं गिटार प्लेयर होता, गिटार पार्ट्स तो हर बॉलीवुड गाने में बज रहे हैं किसी ना किसी तरह के, देन इट वाज अ एफर्ट बेस्ड सिस्टम. राइट. नाउ हियर व्हाट हैपेंस इज कि मेरे को इनोवेट करना पड़ता है कि अच्छा मैं स्कैम 1992 लेता हूँ, उसमें बेस लाइन्स बनाता हूँ, बना के कंपोज करके वो मैं पब्लिश करता हूँ. फिर एट डाउन द लाइन मे बी आई विल टीच इट. सेम विद आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, सनम वाला वर्जन. बेस लाइन्स बनाओ बजाओ, पब्लिश करो, डाउन द लाइन मे बी यू कैन टीच इट. नाइस. The other issue I face is it's not the other issue, the same issue कि मैं सीधा एक लिस्ट बना के ऐसे नहीं कर सकता कि इन सारे गानों का बेस सिखा दूं, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं बनती, कुछ सीखने को नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ उसका कोर क्या है, क्यों बजाया जा रहा हो, है ना. तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे. तो टू जनरेट बेस कंटेंट फॉर दिस जॉनर इज अ लिटिल चैलेंजिंग. मगर अभी थोड़े दिन पहले मैं, क्योंकि मैं भी एक ब्रेक पे चल रहा था, थोड़ा सा रीसेट करने को चीज़ों के लिए, चीज़ों को. सो मैं ये रीसेट ये कर रहा हूँ कि मैंने कैसे सीखा बेस और मैं क्यों बजा पाता हूँ इस तरह से कि these ideas come to me when I'm playing Hindi songs. So the answer was that my focus has been Western music, right? Okay. अब म्यूजिक की तो लैंग्वेज नहीं है, समझाने की लैंग्वेज है. अगर हम इंग्लिश गानों को समझना शुरू करें अच्छे से, हिंदी में, हिंदी भाषा में, राइट, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे बेस प्लेयर्स के ऊपर, उसकी क्वालिटी बहुत बड़ी होगी, बहुत अलग होगी. तो आने वाले दिनों में मैं वही करने वाला हूँ. मैं बॉसा के अंदर एंटर करूंगा प्रॉपर्ली, लैटिन जैज के बारे में बात करूंगा, नाइस, बट मैं वही गाने बजाऊंगा और उनको फिर बता दूंगा कि देखो ख्वाबों के परिंदे जो गाना है ना,
हाँ उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है, इट कम्स फ्रॉम देयर। राइट 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 तो तुम वो वाले 20 गाने सीख लो, वो बेटर है करना, बजाय कि तुम एक गाना सीखो जिसको उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ इस तरह से कि करेक्ट वो सिर्फ इंडिया के लिए काम करे। तो फिर तुम वर्सेटाइल हो जाओगे, अपने से एक बड़े म्यूजिशियन बन सकते हो। ऐसे ही फंक म्यूजिक को समझो, यू नो, लर्न द डिफरेंट जॉनर, स्लैप पॉप के इतने सारे हजारों गाने वेस्टर्न म्यूजिक में, ब्रेक देम डाउन, उसके बारे में बात करते हैं हिंदी में। तो अप्रोच अब चेंज होने वाली है, राइट क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ये बेस्ट तरीका नहीं है बॉलीवुड सिखाने का, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर से बॉलीवुड सिखाना, वो भी बेस, वो सही तरीका नहीं लगता मेरे को। लिमिटेशंस है, सिखाया जा सकता है बट लिमिटेशंस बहुत है, और वो स्लो कर देता है आपको। अंडरस्टूड। बेस्ट टू लर्न वेस्टर्न म्यूजिक एंड प्ले दैट ऑन द बेस, फिर आप हिंदी गाना बजाओगे एकदम अलग लगेगा। हाँ अलग लगेगा, Yeah. खूब पावर से बजेगा, क्लैरिटी से बजेगा, कन्विक्शन से बजेगा। इसीलिए अच्छा लगता है जितने भी हमारे अच्छे बेस प्लेयर हैं वो सब एक्चुअली वेस्टर्न म्यूजिक ही कर रहे हैं। रुशाद मिस्त्री, शेल्डन डिसिल्वा, मोहिनी, एनीबडी, अभिषेक डे, प्राइमरीली दे डू वेस्टर्न म्यूजिक, फिर वो दिलजीत दोसांझ के साथ बजा देते हैं, Right, रहमान के साथ बजा देते हैं। राइट तो yeah, because they're able to play anything. एनीथिंग प्लस द आइडियाज का पूल इतना बड़ा हो जाता है ना कि तुम्हारे सामने हिंदी गाना आता है, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों आइडियाज होते हैं Correct. एग्जीक्यूट करने के लिए। But I guess like what you're saying is like I get that idea, but I think it's the exact opposite if you are not a bassist and say you're like a singer, हाँ right? Like I can completely agree with that because bass as an instrument has been very innovative and बहुत interesting playing, वो सब बाहर हुआ है, हाँ राइट यहाँ नहीं हुआ है, और इसीलिए यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो वहाँ सीख रहे हैं, और देन दे आर कमिंग हियर एंड अप्लाइंग दैट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इन हिंदुस्तानी क्लासिकल अगर आप सीख लेते हैं हाँ एज लाइक अ सिंगर, देन इसमें देयर इज सो मच डीप लेवल ऑफ लर्निंग करेक्ट, दैट वंस यू लर्न दिस, नाउ यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट, आई एग्री विद यू। है ना? सो आई थिंक इट्स लाइक अ opposite kind of a thing, but yeah, that's right. Like I think for bass you have to go to the western kind of stuff. मगर ये भी है कि अभी स्पिल ओवर भी होना शुरू हो गया है काफी By that, what do सारे you mean? क्लासिकल म्यूजिशियंस ना, Okay. like my wife, she's a voice coach, Okay. Vasundhara Ravi. So she's been training a lot of trained classical musicians for technique and vocal health. Oh, okay. So that because एक हिंदुस्तानी क्लासिकल में सिस्टम ये रहता है कि आप पांचवें काले से गाते हो या चौथे से गाते हो। सो इन वेस्टर्न म्यूजिक पर्टिकुलरली सिंगर्स यू डेवलप अ स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगिंग, मतलब कि आप अपनी टेक्निक को इतना रिलैक्स और रिलीज करके, जो भी तरीके होते हैं उनके सीखने के, so she specializes in teaching that, and she's of course herself a phenomenal singer, not because she's my wife but she is phenomenal. So she is able to make their voices like if there's an imagination that this is my range, right? So she has a ways of it's not called range badhana, but the concept of that particular theory is that range does not exist. Okay. Right? If something does not exist, you don't have to increase or decrease it. Correct. It's like everything is yours. Correct. Right? The whole ground is yours. Correct. So you can go anywhere you want. That's And crazy. concept is not that you're singing high or low, because even biologically, apparently vocal folds में ऐसा system नहीं होता है. It's like whistling. Okay. So when you whistle high or low, what are you changing in the whistle? Right. Right? So it's apparently similar for voice. I don't know. I'm not the expert. मगर वहाँ मैं देख रहा हूँ काफी ज़्यादा. Okay. And of course, they are already great singers. Right. And they use this as a superpower then. Wow. It's just a lot is happening in this Nice. world. Now this is one thing I thought that I could speak with you, which I don't think I can speak with a lot of musicians, right? Because you and I, we both know that there is a musician com ना एक certain type के होते हैं, right? हाँ. Like we are artists, right? But what I've seen is, now here's the weird place that I come from. I'm an artist, but I have been in a family where my brother is doing business, right? So मेरा भाई business करता है, ठीक है? And none of my family anywhere around me, they are any musicians या ऐसा कुछ,
right? So I've been surrounded by mostly business, but I am the odd one out, and I'm like looking to do music. ठीक है? So now, because of that, I feel like it's like a superpower for me, because I am able to like fulfill my art side of things by doing my art. Right. But at the same time, I'm also like practical about it and thinking ki okay, you need to survive also. So that part of my that part of me comes from my bhai and like that business background Right. of Bangalore. Right. So अब ये एक चीज है which I feel a lot of musicians they just don't think about. Right. कि पैसा अलग ही है, या तो उनका ऐसा होता है कि पैसा आएगा देखेंगे, राइट, या ऐसे होता है कि दे आर लाइक कंफर्टेबल एंड दे डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट. Correct. ये दो ऑप्शन होते हैं which I've seen. But like for people like you and me who are doing art, we also need to think about ki okay, there has to be a business side of it also. Yeah. Right? So we need to do that in a way that is valuable to whoever is going to get involved in our business. Yeah. And at the same time, we have to do our art also. Yeah. Right? So first of all, I just want to know ki what do you think about money and art together? And how do you separate those things, or how do you like have both and conduct both in your life? So one is that there is this first mindset that a lot of, I would not say just musicians, but many artists and regular humans also have sometimes towards money, that money is evil. Evil, right. Which I think is the first step to break Yeah. for anybody. Right. Or the other thing they think is that they are artists, hence they'll be poor. Or they should be seen as poor. Or they should be seen as somebody in need. Meaning, once me and my friend, we were driving, he wasn't wearing a seat belt or something. Police stops us and he gets out, he's like, sorry and all. Please let me go, I'm a musician. Okay. And I'm looking at his face like, what do you mean? What do you mean? Like, what do you mean you're a musician, so please let you go? Musician काम का What is नाम this खराब हो रहा है. nonsense? Yeah. You know, please let me, I'm a musician. अरे तो ये mindset जो है ना, Right. कुछ लोग रखते हैं, लेकिन recently बहुत सारे मेरे musician friends, like from Delhi, even the Revisit Project people, they are doing Right. these talks about money and everything Right. as musicians. Right. Abhay Sharma has proper strategies and plans that sometimes I ask him about कि क्या सोच रहे हो, कैसे बड़ा करना है बैंड को. तो लोग सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, डेफिनेटली बातें कर रहे हैं. मगर पहले मुझे लगता है जो इवलनेस है ना, उसको हटाना कि जरूरी है. अगर मैं आर्ट करूंगा तो मुझे पैसे के बारे में नहीं सोचना है, वो एक तो हटाना पड़ेगा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो लोग हमेशा पैसा नहीं कमाएंगे एज अ म्यूजिशियन और एज एन आर्टिस्ट. बट आई फील इफ यू हैव अ प्लान, then you can make it happen. For me, the initiation of School of Bass happened because I needed an extra revenue stream. Right. But that's not the only reason behind it. Right. I have to generate value for people. I have to generate revenue for the business, for me. And you wouldn't believe that I haven't built any money from that venture, I would say at all. I've been feeding money into it ताकि मैं सारे एक्सपेरिमेंट करके कुछ दे सकूं लोगों को. Right. तो आज 3 साल 2 साल हो गए जब मैंने पेड वेंचर की तरह इसको शुरू किया था. बट अगेन क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता, तो मुझे अपनी सेट ऑफ मिस्टेक्स करनी पड़ी. Right. अब धीरे धीरे करते करते समझ आ रहा है कि ये नहीं करना. Understood. एंड राइट नाउ इन माई लाइफ आई एम ऑल्सो डूइंग MBA राइट नाउ. You're currently doing it? या Okay. लाइक 6 महीने हो गए अभी मेरे को. Okay. क्योंकि मुझे बिजनेस को ऐसे समझना है कि अगर मैं कल को कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ, किसी इन्वेस्टर से बात करना चाहता हूँ या कुछ बड़ा बिल्ड करना है, आई नीड टू नो सम नट्स एंड बोल्ट्स. नो Right. 100%. Yeah. So I do my music, but I'm also doing MBA right now, so that I build a better school of bass. That's good. That is That's not crazy. a money sucking machine for me also. जैसे मैं अपने gigs करके पैसा कमा रहा हूँ, थोड़ा अपने पास रखता हूँ, बाकी का स्कूल ऑफ बेस में डाल देता हूँ. Yeah. वो जा रहा है उसमें, वापस नहीं आया अभी तक, because of my mistakes. Yeah. Business mistakes, because I don't have a family who Correct. can tell me exactly what to do. Correct. Right?
who have made their mistakes, Right. which I'm absolutely okay with. Yeah. But I feel that everybody needs to have a plan. And also in the musician circuit, there's a issue I feel, which is disrespect towards the work they do to earn money. Especially when they're doing Bollywood gigs, which they don't like. So I will meet some people. Once I met a musician coming out of a rehearsal. मैंने कहा किसकी रिहर्सल हो रही थी, किसके साथ बजा रहे थे? तो वो कहता है कुछ नहीं यार, बस रेंट. So he meant that I was just making rent. Making rent, okay, wow. Right? But I don't even want to tell you who I was playing Wow, for. okay. Right? Inside, he does not want to be there. Right. अब इससे क्या होता है जब तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो ना जहाँ तुम्हें मन नहीं है होने का, ये तुम्हारी प्लेइंग को गिराता है. क्योंकि तुम गंदा बजाओगे. तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, इन्वेस्टेड नहीं हो तुम. Right. सो अगर घर पे बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन जब तुम रिहर्सल रूम में आ रहे हो और ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे तुम्हें पैसा बनाना है सिर्फ, your playing is going to take the hit. Of course. Right? Of course. Now, versus you respectfully go there, saying that I understand I need money. This artist has work. She's or he is giving me money, right? I will give it my best. I'll give it all my love because I'm happy it's giving me so much money, right? And I will also parallelly figure out where else I can generate money from, right? Just make it all positive for yourself. Instead of looking at it like कि यार ये म्यूजिक मैं मजबूरी में बजाता हूँ और आर्टिस्ट वाला म्यूजिक मैं करता हूँ अपने लिए, Right. पर उससे मेरे एसी का बिल भी नहीं भरता, right? You don't have to look at it like that. I mean, if you can merge the both, Right. nothing like it. बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा. बिल्कुल. आज की डेट में. Yeah. अगर मैं ऋत्विज के बारे में सोचूं फॉर एग्जांपल, उसके लिए वो सारा म्यूजिक आर्टिस्ट्री है. Yeah. वो आर्ट अपनी रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे अच्छी इनकम कर रहा है. Yeah, correct. सेम विद मेनी अदर रफ्तार एंड ऑल दीस पीपल. बॉलीवुड सिंगर्स में भी कई ऐसे गाने हैं जो उनको खुद नहीं गाने हैं. Right. वो गा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो फेमस हो गए हैं और लोगों को चाहिए. Right. वो भी मजबूरी में गा रहे हैं. ऐसी भी सिचुएशंस हैं. समझ गया. But I feel that everybody should think about one, how much money they want in life. They have it today or not, that doesn't matter. But at some point you'll have to think how much you need in life. Correct. I am right now I'm in a place where I have a goal set up. Chunk of money आता है तो अगर कुछ चीजें करानी है मुझे स्कूल ऑफ बेस के लिए, and I have to shell out some money for it, then I have to shell it out. Correct. Right? Correct. But I am completely dedicated to building wealth and building artistry at the same time. They do not have to be like ये मैं मजबूरी के लिए करता हूँ, ये मैं आर्टिस्ट्री के लिए करता हूँ. अगर उसको मजबूरी लेबल कर रहे हो, इससे अच्छा ये कि कोई और जॉब ले लो. Correct. जो तुम थोड़ा खुशी से कर सको. Correct. Because the happier you are, the better you will sound as an artist. Right? And overall, your happiness compounds, your being compounds, वो music में दिखता है. So, it is something everybody should think about. Something everybody should write down. That these are my money goals. This is how much I need to live. And these are my artistic goals. This is how I'll feed them, money-wise. Right? And then you can keep growing from there. Makes sense. I've seen so many people who have like not given this the second thought, and मेरे को धीरे धीरे मुझे like इसमें इंटरेस्ट आया है. पहले नहीं था ये, because पहले even I was like कि मेरे को तो आर्टिस्ट बनना है, and that's like a huge reality check that definitely happens at some point during the journey. Like you understand कि oh wait, there is a survival aspect to it, So I became a little passionate about over the period of like let's say the past 2 years or something, and that's when like we spoke about doing the courses and all that. So which I want to talk to you about later, but then that has been going well. But other than that, I have now focused like मैंने ऐसे बहुत बार ऐसे देखा है कि कई सारे ऐसे musicians हैं जो बाहर के हैं, right? And we all know them as musicians. But then there is a different side to them which like blew my mind. कि wait a minute, what are you saying? Like for example, Jason Derulo तो पता होगा आपको. A huge musician, pop star, rock star in the US, right? And
I've been listening to his songs since like school, right? I just found out that Jason Derulo has 13 streams of income. And the number one stream of income where he makes the most amount of money is a car wash business. Amazing. That is insane, right? And he's a pop star. Amazing. तो that like blew my mind कि यार तुम पॉप स्टार हो, तुमको ऑलरेडी कितना पैसा बना ही रहे होगे तुम, तो you imagine how much money he's making like just with that one business. So that really got me thinking कि अरे यार, if a pop star like him can be well informed enough to have 13 streams of income, why shouldn't we be doing the same? Yeah. You know? But then again, like there is a lot of questions like how do you handle everything? But I'm sure at one point when you hit his fame level, everything becomes a little more accessible to you, right? Like it becomes easier, I guess. यार एक्चुअली ना थोड़ा सा मेरे को यही लगता रहता है कि सीखना भी पड़ता है. Right, right, of course. और मुझे ये भी लगता है हमेशा से कि you don't necessarily have to do musician full-time job. Right. I don't think it is a full-time job because it needs its breaks. It's like gymming. I look at it as gymming. You do it in the morning, in the evening. In the middle, you have all the time. All the time. Because you can't force stuff on yourself when Correct, you're studying correct. music, practicing it. क्योंकि physical limitations है. Correct. हाथ दर्द होगा, सब होगा. Correct. तो ये मेरे को एक और चीज लगती है कि सब musicians के पास में time है to do more than just music, and everybody should do it क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर क्रिएट होता है फिर, और जब तुम्हारा कैरेक्टर क्रिएट होता है तो फिर तुम इररिप्लेसेबल हो जाते हो कई जगहों पे. तुम हमेशा उस बैंड की फर्स्ट चेयर रहोगे. Right. जब वो सोचेंगे ये ड्रमर चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा. इसलिए नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, वो तो ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट, बट हाउ डू यू क्राफ्ट योरसेल्फ, दैट विल बी व्हाट यू कंज्यूम, यू नो, what kind of things you read, what do you study, Correct, correct. how much you challenge yourself. Correct. That makes you stand out in the room, in the 100 drummers which Yeah. are in their list, Yeah. or 20 bass players which they are Yeah. thinking about. Yeah. So this I feel is one thing that all musicians should make time to study something, study something extra. Study a dropshipping business, study something. I am trying to study edtech for a long time now. Correct. To figure out that I can make more inflow than outflow. I've touched this industry which is very new in the sense it's bass guitar in Hindi. Correct. It's a niche of a niche. Correct. So it's been challenging, but I'm still exploring what can I do. And if I cannot do anything, at some point I'll have to figure something else. Right. That's crazy. Like, but that's a very fresh way to look at music. मैंने कभी पहले नहीं सोचा था कि it can be just like, you know, a part-time thing. Because क्या है कि now of course if you are say like a student or something, it is a part-time thing. You can't do anything else, right? Yeah. तुम्हारा तो part-time ही है वो. Yeah. And you know, to be really honest, I have seen times in my life where I had like time की पाबंदी थी मेरे पास, right? कि मेरे पास नहीं था time, पूरा दिन नहीं था. And I practiced way harder and way more at that time than I am right now, Yeah. right? I think like that is true, that you know the things that you hear, that the more the, what do you say, like जितने जैसे घंटे होते हैं limiting होती है आपको, जितने घंटे होते हैं आप भर देते हो. भर देते हो उनको. तो The मैंने- limitations actually make you make use of your time much more usably, you know. मैंने भी अपने आप को ना, जब से मेरा एक 90 मिनट का टाइम स्लॉट है सुबह बेस बजाने के लिए, बस वही है. Okay. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने फोकस नहीं किया 90 मिनट तक Right. तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं है उस दिन. Correct. Right? And I am working on my own things. I want to, you know, Correct. I want to play jazz vocabulary on the bass Correct. as a soloist. So I'm working on those things, and every day I need a little bit of growth. So that is my time. That's it. Because before that I'm studying. After that I am attending to the School of Bass to create the new courses or something else. And I'm building my wife's project right now. There's an R&B soul band we have together. Okay. Jazz R&B soul. So that is under kind of shaping itself right now. Then yeah, that's it. The day is over. Makes sense.
because if you just give yourself 90 minutes, and this is something that I've like heard so many times, right? Small chunks of deep work versus long chunks of like okay mediocre work. And ये मैंने देखा भी है like सच होते हुए भी, क्योंकि as I told you like एक time था जब मैं college जाता था, which was the place that I hated to be at, right? That college used to be like मैं यहाँ क्यों हूँ? It was that kind of a place. So for that I used to wake up at 5:30, go like 6 o'clock bus आती थी, 6 o'clock and then by 7 or 7:30 you're at the college. And this was an engineering college, but where I was doing like a mass media degree. So because of their engineering college and their rules, even though our course was like half day, we were required to stay the whole day. Oh God. Yeah. So it was not like कि आप 8 बजे आके 12 बजे या 2 बजे जा रहे हो. We used to go back at same time the rest of the college leaves. Got it. So we used to leave at 4, came back home at 5. And at that time, my routine used to be like, after 5 is the day starts. Right? 5 बजे के बाद में मेरा दिन शुरू हो रहा है. And it used to be like 5:30 I run to the gym. I work out. By 7 I'm back. Eat dinner. Just freshen up. And by 8 I will sit to practice the guitar until 11. That's insane. Yeah. That's insane. Like, I kind of sometimes think about that time in my life and I'm like, यार उस दिन क्या अलग था और आज क्या अलग है, right? एक feeling of urgency भी चाहिए होती है, right? कि कब तक करना है, कब तक करना है, हाँ. तो अगर आप सच में कुछ अचीव करना चाहते हो प्रैक्टिस सेशन से, तो आपको उसमें भी 90 मिनट्स में एक फीलिंग ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है. और प्रैक्टिस सेशन को डायरेक्शन देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? मतलब कि अगर आप मान लो डिसाइड कर रहे हो मैं ब्लू स्केल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट? आपके 90 मिनट्स हैं, अभी बड़ी वेग टर्म है, राइट? मैं ब्लू स्केल में क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ? क्या मैं अगले 15 मिनट सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग बजाने वाला हूँ 12 कीज में? क्या ये मेरा ब्लू स्केल का गोल है? क्या मैं क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लू स्केल के अंदर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स? Am I trying to play 16 notes in the blue scale, right? So like these little awareness things. So for me personally, I write it down. Nice. Let's say I'm practicing phrasing. I'm practicing, I have to say A, another A, and then I have to say a B to it, right? Okay. So I write it down. First 30 minutes of a practice, I'm going to be utilizing, let's say diminished and the blues scale descent to say A and then a B, right? So even my mind starts wandering to see यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे chords बजाने, दूसरा गाना बजाने लग गए, जो बहुत होता है ना, right. practice के time पे. So it brings me back that this is what you wrote, this is the outcome you are getting right now. So to craft that is also a very important part of practice, I feel. Then at the end of the session you can see, अच्छा मैंने जो ascending descending 16 notes बजाने थे, वो मैंने बजा लिए, या मेरे नहीं हुए, मैं कल जब बैठूंगा तो इसको फिर से अटेंड करूंगा. सो लिटिल यू नीड माइक्रो गोल्स इनसाइड योर बिगर गोल, एंड माइक्रो गोल्स शुड बी समथिंग व्हिच कंपाउंड एंड कलेक्ट देमसेल्व्स. I think that's a very systematic approach to like look at something as common as practicing. Yeah. Right? Because मैंने ये भी बहुत बार देखा है कि I heard the term long time back called deliberate practice. हाँ. Right? So basically अगर आप प्रैक्टिस भी गलत अगर कर लिए, so that is like going backwards. यार ये एक, I'm sorry interrupting you. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्लिम्जी प्रैक्टिस छोड़ते हो ना, हाँ, बिकॉज तुम्हारा सबकॉन्शियस बेसिकली ज्यादा प्रैक्टिस करता है. राइट. I think somebody was saying it's 1,000 times repetition, and particularly in faster repetition. Okay. I don't know the exact number. Okay. But whatever it is, like it is humanly impossible to physically execute it. You basically give that to the subconscious for it to repeat itself in the sleep. मतलब कि अगर तुम कुछ सीख के सो जाओगे ना, Got it. हाँ. तो अगले दिन तुम्हें वो आ जाएगा, वो बेटर होगा. वर्सेस अगर तुम कुछ आधा अधूरा सा फ्लिम्जी प्रैक्टिस करके सो गए हो, तो वो ब्रेन को समझ नहीं आता रिपीट क्या करना है. राइट. तो या तो वो फ्लिम्जी रिपीट करेगा, या फिर वो उसको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है. Exactly. So whenever you finish your session,
if you're trying to learn to play something very fast and it's coming out flimsy, slow down, play it clean, then wrap your session. Yeah. Right? Be able to understand how you're playing it. Makes sense. Then your subconscious will also help you to improve it. Otherwise, it's gonna take forever for you to become better at whatever you're trying to become better at. Correct. Because I think हम लोग को बहुत लोगों को ये भी educate करना पड़ेगा, like as we have also like in our paths learned over time कि there is a way to practice. Yeah. Right. ऐसा नहीं है कि आप बस इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ गए और आपको जो मन आया वो किया और वो उसको आप प्रैक्टिस बोल देते हो. Correct. So like, but that was like really helpful because you showed कि how you do it is actually write it down. Yeah. And then make a systemized like approach and you know exactly what you're doing. I do this with everything actually. Okay, it's like, so basically it's like then a lifestyle choice. Everything meaning, let's say I have to do research on YouTube. Huh. Now it's a bank of distraction, right? Yeah, yeah. And let's say I'm looking for something. I literally have a paper written there, what is the outcome I'm looking for. Right? I have to write it down. I am looking for songs from the 80s which have Motown bass lines or something like that. Okay. So that when that other Distractions come. Modi ji video thumbnail is showing that Modi ji said this to Kejriwal, I don't click on that. Right? Even if I do, you know why like, you need to oh, go my back. paper says you're looking for Motown bass lines. Okay, got it. And then switch back. I mean that's crazy, yaar. And I think like I have never been doing these kind of things, but these are like very helpful stuff that even I can use in my daily क्योंकि यार बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया. बहुत ज़्यादा. तो फोन मैंने साइलेंट पे काफी ज्यादा रखना शुरू कर दिया घर पे. Only ring that rings is my wife's. If she calls, then it'll ring. Otherwise, everything else is silent. And then I try to take chunks together कि 2 बजे देखूंगा अच्छे से फोन, 2 से 3 पूरा देख लिया दोपहर को. फिर 6 बजे के बाद फोन ऑन है. सुबह 10 बजे से पहले प्रॉपर्ली ऑन है. बट अदरवाइज बीच में ना थोड़ा बैठना ही पड़ता है यार बिना फोन के. करेक्ट. नहीं तो काम नहीं होता. करेक्ट. काम नहीं होता. There was a video of सोनू निगम जी and I saw one of his interviews और वो ऐसे ही बोल रहे थे कि उनके दिन में they had so less things to do. उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, इतने बोर होते थे. They were like कि यार ठीक है और कुछ तो करने के लिए है नहीं, चलो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं. And that's like literally how he told कि that's why I like kept practicing. And he was like literally telling in that interview कि how he feels sorry for today's generation. Because there's so many distractions, आप करोगे क्या? Everybody is out there to get your attention, right? आपका apps हो गया, आपका phone हो गया, आपके आसपास में जो भी है, everything wants your attention. Yeah. And it's like hard to stay away from it. You have to like consciously avoid it. You have to be aware of it. You have to make time for yourself. Earlier you didn't have to. Exactly. So that's Earlier why you had to look for people. यार कोई किससे बात नहीं हुई. बात नहीं हो रही है. हाँ. फिर किसी के घर जा रहे हैं बहुत दूर. हाँ. घंटी बजाते हैं वो है नहीं घर पे. कोई बात नहीं, वापस आ गए. ये करते करते आधा दिन निकल गया, बस हो गया. बढ़िया टाइम पास हो गया उस दिन. वो दिन हो गया पूरा. फिर उसको 2-3 हफ्ते बाद बता रहे हैं यार मैं तेरे घर आया था उस दिन, तू मिला नहीं था. Crazy man. Crazy. That was like the. But you know also we used to imagine a lot more. जैसे हम वॉकमैन लगाते थे, निर्वाणा बज रहा है, तो हमारी अपनी इमेजिनेशन होती थी. राइट. यूट्यूब पे देखा नहीं है, वीडियोस है नहीं. करेक्ट. मैंने जब पहली बार पैंटेरा सुना था, हाँ, मुझे लगा था कि 8-10 लोग गा रहे हैं, 17-18 लोग ड्रम्स लेके बैठे हुए और 20-30 लोग गिटार बजा रहे हैं. Because there was, I didn't know it is just 3 people. Yeah. That is how weird it was for me when I saw Pantera is a 3-piece band. Wow. मुझे पता ही नहीं था. Insane. It's madness. Yeah. I mean, there are so ऐसे तो बहुत सारे किस्से मैंने देखे हैं कि like because of these limitations that we had during our days, उस टाइम के वो limitations की वजह से you were forced to be more creative. You were forced to think more creatively and imagine stuff, right? हाँ. I'm sure you know Tommy Emmanuel. हाँ. This amazing acoustic guitar player. उनका भी मैंने ऐसे एक किस्सा सुना था. He was at some music school and he was giving a lecture and people asked him कि how did you like arrive at the style of playing that you are playing? Like how did you
discover that there is this style where you are able to play the bass, the rhythm and the lead all at the same time. तो he literally was like, मैं पुराने दिन में जब मैं गाना सुनता था रेडियो पे, मेरे को तो पूरा गाना सुनता था एक साथ. मेरे को क्या पता कि एक बेस अलग है, एक ड्रम अलग है और ये अलग है. He never knew that. And that's when he wanted to copy it on his instrument, he's like, okay, so maybe this is how it is. Yeah. And that's how like he got to a style of playing where he's playing all the things all at once, and it's become unique now. Makes sense. It's crazy, yaar. Makes 100% sense. Crazy. Steve Bailey, I think, bass player, plays fretless bass. Okay. I think I get the name right. Okay. Okay. Slide उसने सुनी थी पहली बार. Okay. बेस गिटार पे. हाँ. उसको समझ में नहीं आया कैसे बजी है. रिकॉर्डिंग में सुनी थी. Okay. तो उसको लगा कि बेस प्लेयर ने सारे नोट इतनी तेज बजा के नीचे तक और फिर उतनी तेज बजाता वो वापस आ गया. और उसने प्रैक्टिस कर ली. Oh my God. कहता लेकिन मैं सारी जिंदगी ये सोचता रहा कि ये क्लीन क्यों नहीं आ रही है, उसकी तरह क्यों नहीं आ रही है. फिर then he saw a gig live and the bass player like, he's like, shit, I spent my entire life practicing every note on the bass. That is insane. Going up and down. That is insane. I love that story. Yeah. Okay, so these are some questions that I wrote down, like kind of generic, but then I'm really curious to know what you think about them. बताओ. So I'm sure you've heard these questions a lot, but then again, let's just do it. First one is, if you had a chance to meet anyone living or dead, your favorite musician, who would it be and why? Yaar, I haven't met Victor Wooten yet. Oof. So I have to meet him. What a guy. And why? Because he's very connected to nature. Right. Right. He lives, according to me, from the distance I see, I feel he's very authentic. Yeah. And there is no difference between what he wants to say and what comes out of his hands. Crazy. So I'm a fan of being real. Right. Like very real, as authentic as you As can possible, be. yeah. And he's a guy who I see express himself through that instrument. Not because he's a bass player, even if he played anything else. And he would have been this great, of course. Yeah. I just want to experience his presence. His presence. I haven't met him yet. You COVID know, से पहले जाने वाले थे हम लोग. Oh, really? मैं और वसु दोनों. Where? To the Victor Wooten camp. He does a camp every year, Yeah, is yeah. it? So we did the booking and everything to go there. पर फिर सब कुछ travel वगैरह. Where was it happening? Nashville. Oh, nice. Yeah. So we were going, but वो cancel हो गया. Okay. मगर Interesting. and the other thing he does is he lives life bigger than music. Like life is not all about music. That's not the necessary thing. Right. He lives life. You know, he does other stuff. Like he's interested in tracking animals, and Right. he's interested in the wild. Right. He does his, the flag, pole flag and all. हाँ. तो वो सब करता है यार वो. यार सही है. और हम लोग सोचते थे टोन कहाँ से आ रही है, ताकत कहाँ से आ रही है. I mean, I've experienced this at a level. अभी मेरे आजकल शोल्डर में कुछ इशू चल रहा है, but I was learning combat training in the middle. Boxing सीख रहा था मैं. So the micro strength it gives you, like when you're doing fingertip push-ups, for example. Oh. When you touch the bass, everything changes, yaar. Becomes like you don't feel anything. So that's the guy, to answer your question. Nice. Yaar, I have, like being a guitarist, I have connected with Victor so much. You met him? I have not met him, but then watching just his content and the way he speaks and the thoughts and the ideas he has about music and generally towards life, I really connected with that man. Like it was insane. बहुत सही लगता है यार मेरे को भी वो. And I really then started digging and saw all of his content after that. That was crazy. Okay, so what about like musicians who shaped your music tastes? Who shaped my taste? Yeah. And even your like playing skill. Actually, it was my teachers at SAM where I went. Oh, nice. Most importantly, Andres Rotmistrovsky, he's a bass player, and Panayiotis Andrew. Okay. These two people were like really important to kind of
Paniotis was this kung fu kind of teacher. And one thing he taught me was to play quarter notes at 30 BPM. Okay. And we used to literally do these exercises for I don't know how many hours, man. Wow. You just hit the note at 30 BPM and then let it ring, then the next one. And that changes your tone. You know, if you touch the bass for that long and that slow, and then you would make it double, and then triplets, then 16 notes, so on and so forth. That's some magical technique of practicing, where you are playing that way. You know, you are in that whole zone of making it as clean as it can get. Clean as it can be. That's one guy. Then there is Andres Rotmistrovsky, of course. Beautiful chord melody player on From the bass. Sam? From yeah, I mean these guys were coming from abroad to teach, Okay. and then they left Okay. after 4 months, 5 months. But मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको देख के ये समझ में आया था कि जब ये लोग बजा रहे होते हैं, एक तो इनके रिकॉर्डिंग सेशन देखे, तो पहले तो आइडिया ही नहीं था उससे पहले कि रिकॉर्डिंग सेशन एक बार में बजता है. राइट. कभी नहीं देखा था. राइट. ये देखा था कि अच्छा 4 बार बज गए 5. But these people used to give varieties of takes, one after the other, flawlessly. Different energy, different time feel. कि मैं थोड़ा लेबैक करके पूरा गाना बजा देता हूँ, अब थोड़ा पुश करके बजा देता हूँ. ये तरह की varieties ये लोग स्टूडियो में दे रहे थे. So Prasanna, the guitar player, he was doing music for a movie. Okay. And all the students were there at that studio. And these guys were recording there. All the teachers from Sam. Got it. That's when I saw. That was one thing that really committed me that I want to be like this. I want to be able to play the whole song through. And hence then when we played Arrived, that YouTube show, and there was live recording. And we used to play the songs through. बड़ा मजा आता था यार. That you're actually playing. Because कई सारे TV shows live नहीं होते. Right. They're pre-recorded, you're miming them. Then you have Paniotis and all. I saw them jam on stage, and whenever they would jam, they would make it a party without any previous discussions between the musicians. So that something really got me thinking that ऐसा बनना है. Nice. ये करना है. Crazy. Okay, so one last thing that I wanted to ask you is, like, I know you have been playing with and for a lot of stuff that Vishal Bhardwaj has been doing, right? So how has it been working with him, and how did you get in touch with him, and what's been like your best type of work story with him? So I don't know how I got my first gig. Actually, I don't remember it for some reason. Okay. I'm not able to recall. ठीक है. कि क्यों मेरे को वो gig मिली थी. Oh yeah, I think Nirvan, another drummer who plays with Preetam, Okay. he suggested me Okay. that call Saurabh to play the gig. That's what I can remember. That was the first Understood. gig. It was for Bollywood Music Project Festival. Oh, okay. जो नवंबर में होता है, right? हाँ, तो ये पहला था, I think. Okay. तब he was performing. That's when I played with him. Understood. Met him, and he's again what a guy. Knows business. Right. Knows movies, knows music, and switches like crazy. Because when we were rehearsing sometimes at his studio floor, it's a huge floor, it's like a terrace. Half of it is open, so you can rehearse there. The other half is recording space. फिर ऐसे ही editing space है. फिर एक room है उनका, वहाँ बैठ के लिखते हैं. So he'll just come, he'll like, अच्छा गाना ready हो गया, आप लोगों ने देख लिए chords वगैरह, हाँ जी, चलो मैं गाता हूँ फटाफट. He'll sing it. अच्छा मैं अब edit से होके वापस आता हूँ. So it's like coming and wearing going multiple hats. quickly. That's then and there, real time. Right. तो एक बड़ी inspiring चीज़ है वो अपने आप में. Yeah. वो देखना. बाकी my recordings to when I do it for them, I'm very scared. Because scared not to play, Okay. but I know that I can throw in ideas. So a lot of their songs, I just play whatever I want to play. Okay. But I also send sorry notes with that. Okay. That I'm sorry, I think I put too much of this. जैसे खुफिया का भी एक गाना ना होश चले में मैंने बेस बजाया. उसमें मैंने एक बहुत hectic सी बेस पार्ट डाल दिया था, एक transition. Okay. And I sent them, I said, I'm sorry I've played this.
and then there was one more song La Ilaj from Darling. हाँ. उसमें मैंने कॉर्ड्स बजा दी बेस के ऊपर फिर मैं सॉरी भेज रहा हूँ उनको कि सॉरी देखो नॉर्मल भी भेज दिया है ये भी भेज दिया है सो whenever I press send and the producer who works for them for him Deva Preeto I'm always sending him sorry notes and I'm sending them variations that ये भी देख सो ये डाल सकते हो ये simpler है right. but they don't ever interfere in your creative processes they are happy to receive anything from you I mean, Crazy. at least in my case, he has right. complete trust कि जो आएगा creative आएगा अच्छा आएगा और थोड़ा सा अलग होगा and he's been very kind I would say that whatever I've played has been kept the way it was sent because to me it was sounding like a great idea to put but traditionally when I've played Bollywood songs with other people like I know what my line is I cannot cross that line like I cannot play chromatics sometimes even if I'm going from C to D because the moment you do that there was one recording I was doing and that music director really freaked out which is a normal motion on the bass from C to D right you play C sharp D quickly he's like तुमने गलत सुर लगा दिया बीच में ऐसे कैसे recording कर रहे हो तुम okay I said, I'm sorry, let's fix it. I'll do another take. Because I'm also, when I'm recording for somebody, थोड़ा सा सस करना पड़ता है उनको कि क्या कर रहे हैं मतलब what are they looking for? So similarly, if I was playing for somebody else, जैसे संदेश शांडिल्या, prefers more like, nothing should take anybody's focus away from the voice, the song, the story. Right? So everybody else play minimal. Got it. So then when I play bass there, I'm pretty much playing this root note. That's it. But with Vishal Bhardwaj, everything's been epic, every experience, and I'm now beginning to play more and more gigs with them. बड़ा मजा आता है. बहुत सही यार. बड़ा मजा आता है. One of those people who I've always been impressed with because he's been able to wear multiple hats first of all, and then the kind of music he's been creating. Yeah. Only he's been able to create that type of music. I haven't seen anybody else like have that kind of sound. Honest, no. Yeah, that very is honest. the whole game that he's not sitting thinking कि ये लोगों को अच्छा लगेगा. हाँ, उनको जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं वो. हाँ, मगर ये भी क्या होता है कि कई बार तुम बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हो reality से. Right. But the thing is again he has built his character, right? He has whatever he's going to create, it is going to be sweet in its own manner. Correct. Right? It's not made, nowadays it might not be something जैसे पहले सत्या आई थी. हाँ. है ना? अब आज की डेट में मूवीज इतनी ज्यादा आती हैं कि क्लटर बहुत बढ़ गया है. Correct. तो ये कुछ अमेजिंग भी कर रही है. कई बार वो दिख नहीं पाता बिकॉज बी टीम के पास में मे बी मार्केटिंग बजट ज्यादा हो गया या फिर कोई और स्ट्रेटजीज लगी हुई है कि ये चीज छुप जाए. Right. But everything he makes, I find it fantastic. Fantastic, yeah. It's beautiful. What's your favorite songs by him? By him? यार एक तो डेटेड है बहुत अच्छा लगता है. बहुत सही है वो. That's amazing. Like only somebody like him can do that. Shaitan. He's very shaitan also. Yeah. शैतानी करेंगे. That's a completely different side. Yeah. I found like I actually इन लोग विशाल सर का ये गाना जो पानी पानी रहे. हाँ. ये इतना iconic है and he's one of his own favorites. Yeah. Right? But I discovered it so late. I was so late to the party, but then fell in love with it the minute I heard to it. That is one of my favorites. And then there was this movie जिसमें दो बहनें होती है. Do you remember that? What was that movie called? I don't know. It's about two sisters who keep fighting. हाँ. I forgot what the movie name was. I think it came on Netflix. It's called Pataka. अच्छा. पटाखा मूवी की थी वो. उस मूवी में एक गाना था नैना बंजारे. I think हमने बजाया है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी. I'm sure you must have. तो वो गाना sung by अरिजीत. हाँ. I was like यार ये क्या गाना है, मजा आ गया. Crazy. एक और गाना है मेरे को बहुत पसंद है वो रुआ रुआ नाम है उसका. Oh, very nice song. That's one of the like I played Very bass nice for that song. Okay. But I mean that was my first recording with them. Okay, हाँ. And it's just From phenomenal. Son Chidiya. Son Chidiya. हाँ, okay. मूवी भी बहुत सही है मगर ये है कि that genre no. Yeah. वो आके चले जाता है. Correct. मगर उसको और बड़ा होना चाहिए यार वो डिजर्व करती है वो चीजें. Right. बहुत जबरदस्त.
राइटिंग है वो सारी. Correct. Crazy. It's completely mad. What a man to work with यार, but बहुत सही है. He's a genius. There's nobody like him. Even Rekha ji यार. हाँ यार. The way she sings हाँ यार. makes you Oh cry. my God. Correct. I think we can stop it here. What do you think? Let's Thank stop you for it. coming. Oh So, shit. Do a proper high five. Thank you for coming. My pleasure. And you should check his website out. It's called School of Bass. Yeah, YouTube, The School of Bass. हाँ. The And website? To study bass, theschoolofbass.in. Schoolofbass.in. Theschoolofbass.in. Theschoolofbass.in. Crazy. Thank you, All man. right. Thank you so Lots much. of fun. मिलते हैं यार. सूरज हुआ मध्यम.